So by default, the recording will start. Stop sharing the screen. Namaskar, good evening. I'm Sanskriti Menon, Senior Program Director with Center for Environment Education. And on behalf of MICA, Mahayouth for Climate Action, I welcome you to this webinar series on green skills. Thank you for joining it. I'm also joined here by my colleague, Avdut Abhyankar, Project Officer at the Center for Environment Education. He coordinates MICA and the Youth Water Stewardship Program at CE. MICA is supported by UNICEF, the Center for Environment Education, and Aquadam. UNICEF, as you may know, is part of the UN system, United Nations system, and it works worldwide to protect the rights of children and young people. Aquadam is an expert organization advocating for sustainable groundwater management in India. And the Center for Environment Education is a national institute. It was established as a center of excellence of the Government of India's Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and it has a mandate to enhance environmental education, environmental awareness nationwide. Together, UNICEF, CEE, and Aquadam support the MICA platform, which, as I mentioned, is Mahayouth for Climate Action. And this webinar series is part of the activities of MICA. And this webinar series will bring you several interesting topics and sharing on a weekly basis till November or even December. We will also hear more about MICA shortly today and more about the Green webinar series as well, Green Skills webinar series as well. Before that, I have the pleasure of introducing to you a young speaker for this inaugural webinar of the series on green skills, Ms. Priyanka Shendge. Priyanka is state consultant with UNICEF Maharashtra on youth advocacy and climate change. And for about 5 years now, I think since her master's program, she's been working on rural livelihoods, sustainability, and youth engagement. Priyanka will present the main topic today, which is on resume building for green jobs. I'm really looking forward to your presentation, Priyanka. And I'm also actually very interested to hear the inputs from our audience today. We, of course, have some competition from the match which is going on, but I think we will have an engaged audience and really look forward to your suggestions, questions, comments. These are all highly welcome. You can put them in the QA box or in the chat box, and we will have time to discuss. Priyanka, of course, we've been working together for some time now, but for the benefit of the audience,
I just want to hear from you. Where does your own interest in sustainable development come from? Was there a specific moment which has made you so committed in your personal life and choice of career? Thank you so much, Sankriti, and it's really an honor to be here, all talking to all of you and getting hosted with alongside you as we've worked for many years now together. So my interest in the field of environment started when I was in eighth standard in school. I joined a club similar to Green Clubs. It was called Roots and Shoots, which was started by Jane Goodall, and so there I heard, a lot of seminars, and in school we did through Roots and Shoots, we did a lot of different activities in school. We started our own garden in school. And then I slowly took up topics like gender, then looked at MDGs. During that time in school, we wrote an essay on Millennium Development Goals. And that sort of brought me closer to knowing what are the solutions to environment. And so I started researching, did my bachelor's in the field itself, environment science, and then from there onwards, it's all been all to do with this field of green sector and environment. प्रियंका, बहुत ही अच्छी बात है. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. और मुझे लगता है कि जैसे अभी हम लोग कई सारे पर्यावरण शिक्षण के इको क्लब्स, ग्रीन क्लब्स अलग अलग कॉलेजेस और यूथ मतलब स्कूल्स में शुरू किए हैं, तो उससे और भी कई बच्चों को और यूथ को ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू how many new activities will come out and how many new green advocates will come out from all of these activities. तो अभी थोड़ा क्या माइका के बारे में आप बताना चाहेंगे? श्योर श्योर. सो You want बहुत to share some इंटरेस्टिंग slides? Yeah. So बहुत इंटरेस्टिंग है कि गोइंग फ्रॉम, मैंने जब शुरू किया था एक क्लब से, और अभी ये क्लब का कॉन्सेप्ट अभी स्लोली आल्सो गेटिंग इन महाराष्ट्र. सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली ये जर्नी फॉलो करनी है कि कैसे ग्रीन क्लब से क्लाइमेट एडवोकेट्स आगे आएंगे. सो very excited also to share what the platform of Maha Youth for Climate Action is. I will share my slides. आप सभी ने ये लोगो देखा होगा कहीं पोस्टर्स में या फिर ऑनलाइन देखा होगा, बट हमने लास्ट ईयर महाराष्ट्र यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन स्थापित किया विद सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, और अब जाके आगे जाके वाटर इज वन मेजर एस्पेक्ट जो यूनिसेफ और एक्वाडैम along with CE we are working on. तो महाराष्ट्र यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन, शॉर्ट नोन फॉर माइका, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो जो यूथ 15 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप में है. उन सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिनको ऑलरेडी आप एक्शंस लेते हो, आप एक एडवोकेसी जर्नी में हो. कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूथ प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल लेवल पे तैयार हुए हैं, नेशनल लेवल पे इंडिया यूथ नेटवर्क्स है, और फिर हमने ऐसे सोचा कि एक स्टेट वाइड प्लेटफॉर्म हो तो फिर इजीली आप अपनी कम्युनिटीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो आपके कोई प्रॉब्लम्स या फिर आपके सॉल्यूशंस, डिफरेंट आपके इनोवेशंस जो है. as a youth we can all be part of this mica network and share and bring them forward. तो ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे सबके लिए जो अभी तक शायद एक स्टेट लेवल पे ऐसा हुआ हुआ है मल्टीपल स्टेट्स में, पर लेकिन महाराष्ट्र में ये एक नई तरीके से क्लाइमेट स्पेसिफिक नेटवर्क आप देख सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम अलग अलग यूथ शेयर करते हैं हमारी स्टोरीज, ब्लॉग्स हो, वीडियोस हो, या फिर कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हो, वी शेयर इट ऑल. और फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी होती है कि कई जॉब्स होंगे महाराष्ट्र में या फिर आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र. किसी को इंटरेस्ट है तो वो जाके अप्लाई कर सकते हैं. एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है क्लाइमेट चेंज पे थ्रू माइका, जहाँ आप
एक सर्टिफिकेट ले सकते हो टू अंडरस्टैंड। देयर आर डिफरेंट कोर्सेज, मतलब अलग अलग यूनिट्स है, एनर्जी मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक्स लेके ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाइड मेथड में ये एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडेड है। आपको लिंक शेयर की जाएगी इसके बाद। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो कम प्लेटफॉर्म्स दिखाए जाते हैं या फिर एडवोकेट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे, कनेक्टिंग यूथ टू द गवर्नमेंट। रिसेंटली हमने एक कॉन्फ्रेंस जनवरी में किया था जहाँ पे 60 यूथ फ्रॉम महाराष्ट्र वर सिलेक्टेड, और उन्होंने एक स्टेटमेंट, हम सब ने एक स्टेटमेंट तैयार किया और वो स्टेटमेंट प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स है जिस तरीके से हम हमारे जो डिमांड्स है या फिर हमारे सोल्यूशंस है आगे गवर्नमेंट के साथ या फिर इंटरनेशनल नेटवर्क्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारा एक सोशल मीडिया भी है, माइका_क्लाइमेट ऑन इंस्टाग्राम। आप उस पे जोड़ सकते हो, आप उस पे देख सकते हो अलग अलग अनाउंसमेंट्स। तो दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज माइका। और अब तक जो जर्नी है बहुत ही एक्साइटिंग हुई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप्स हुए इन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, शायद कहीं माइका मेंबर्स आज जुड़े हुए हैं, तो विल डेफिनेटली वेलकम यू ऑल। और आपने जब वर्कशॉप्स किया तो वी रिसीव बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला कि दे गॉट अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक, प्रेजेंट कर सकते हैं आपके जो प्रोजेक्ट्स है कॉलेज लेवल पे, क्लाइमेट रिलेटेड, एनवायरमेंट। फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस और एक हुआ था, लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ लास्ट ईयर, और जो हर साल होता है, इस साल केरला में है। माइका के कहीं यूथ उसमें सिलेक्टेड हुए हैं, तो हमारे ग्रुप में ये हम शेयर करते रहते हैं। आप डेफिनेटली देख सकते हो कि कैसे वी आर इन्वॉल्विंग अस यंग पीपल इन टू द स्पेस ऑफ क्लाइमेट एडवोकेसी। और फिर फेलोशिप भी रन किया था, देन जैसे मैंने बताया कॉन्फ्रेंस भी रन किया था। सो बेसिकली दैट इज बीन द जर्नी, कैसे माइका को आगे लेके आए हैं अभी तक। और सिंस इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म, बहुत सारा अलग अलग स्टेजेस पे रिकग्निशन हमें मिला है। वी गॉट अ स्लॉट टू स्पीक एट दिल्ली जब एक नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीज आर माइका मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया था ये कॉन्फ्रेंस, और दे प्रेजेंटेड टू मेनी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। उन्होंने ग्रुप डिस्कशंस के द्वारा चर्चा की और प्रेजेंट किया, स्टेट लेवल ऑफ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल स्टेट। और इंटरेस्टिंगली यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में भी माइका नेटवर्क के बारे में आई गॉट अ अमेजिंग चांस टू स्पीक अबाउट माइका एट द इंटरनेशनल लेवल। तो बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज माइका के अंडर है यूथ के लिए, एनवायरमेंट रिलेटेड। एंड ऑफ कोर्स दिस कोर्स यू कैन, आप सभी ये कोर्स कर सकते हो महायूथनेट.in, यहाँ पे आप वेबसाइट है जहाँ पे आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। फिर बिल्डिंग योर नेटवर्क, जैसे एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर चर्चाएं होती है, फिर इन पर्सन भी हम मिलते हैं, कई बार डिस्ट्रिक्ट्स में जाके मिलते हैं। तो इट्स अ वेरी यूजफुल वे टू नेटवर्क। एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ग्रीन जॉब्स अनाउंसमेंट्स होते हैं अलग अलग एरियाज में जहाँ पे जॉब्स है, बी शेयर दोस। तो इस तरीके से आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ईमेल आईडी यहाँ पे है mica.online@ceindia.org, और फिर इंस्टाग्राम पेज है mica_climate। So that's a little bit about what mica is। और आपको कुछ questions हो इस बारे में तो definitely put it in the chat box। Over to you, Sanskrit। थैंक्स प्रियंका। सो बेसिकली सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है, बट इसका जो मुख्य एक हेतु ये है कि जो स्टोरीज, जो एक्शंस यंग पीपल ले रहे हैं, यूथ ले रहे हैं, और जो उनके क्वेश्चंस हैं, वो ये माइका प्लेटफॉर्म में उभर के आ सकते हैं। तो प्रियंका इज अ पार्ट ऑफ माइका हरसेल्फ, बट अलग अलग यूथ जो माइका से जुड़े हैं
उनको भी जैसे ये ग्रीन स्किल्स वेबिनार सीरीज में ही शेयरिंग का अपॉर्चुनिटी है, या जब हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं तो उसमें प्रेजेंटेशन डिस्कशंस का अपॉर्चुनिटीज है. सो इट इज वेरी मच अ यूथ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब लोग भाग ले सकते हैं. So thanks for that, Priyanka. Great to know about MICA, and I'm hoping and am sure that we will have more and more participation from the young people that are joining in today. Um, shall we start with your presentation on building your resume for green jobs? श्योर. थैंक यू. सो उससे पहले अभी कुछ पोल है. पोल है. आप सभी को थोड़े से क्वेश्चंस अभी जस्ट ब्रीफली क्वेश्चंस आएंगे आपके स्क्रीन के सामने. मैं लॉन्च करती हूँ पोल. इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा कि आप कहाँ से जुड़ रहे हो, जस्ट टू नो कि आप कौन से एरिया से यहाँ पे आज ज्वाइन हुए हो, टू अंडरस्टैंड यू नो कि आर वी हैविंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र, और फिर या आप महाराष्ट्र से जुड़ रहे हो. तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा आपके स्क्रीन के सामने. जस्ट एड इट, एड टिक, एंड टिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा. ग्रेट. 1% स्लोली सब ऐड कर रहे हैं आन्सर उनके. जे मराठी बोलतात त्यांच्यासाठी मी मराठीमध्ये सांगते की हा पहिला प्रश्न तुमच्या समोर येतो की तुम्ही कुठून जॉईन करताय. महाराष्ट्रामधनं, काही जण महाराष्ट्राच्या बाहेर मधनं पण जॉईन करतात आणि काही इंडियामधनं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलरेडी मेनी पीपल हॅव स्टार्टेड. व्हॉट इज युअर करंट प्रोफाईल. तर आपण आज रेझ्युमे बद्दल बोलणार आहोत की तुम्ही कसा तुमचा रेझ्युमे बिल्ड करू शकता. तर मला हे जाणून घ्यायचं माझ्या सेशनच्या आधी की तुम्ही एक्झॅक्टली काय करता. तुम्ही कॉलेज स्टुडंट आहात. मी बघू शकते 63% आउट ऑफ 19 पीपल हॅव सेड दे आर फ्रॉम कॉलेजेस. सो तुम्ही समजा फ्रेशर्स म्हणजे आत्ताच कॉलेजमधनं बाहेर पडलात आणि तुम्ही जॉब शोधताय, तर तुम्ही ह्या फील्डमध्ये फ्रेशर्स म्हणून टाकू शकता. किंवा तुम्ही कॉलेज स्टुडंट पण असाल आणि तुम्ही फ्रेशर्स पण असाल, म्हणजे जस्ट थर्ड इयरला ऑलमोस्ट संपताय, एक्झाम्स राहिले, ते असू शकतात. किंवा काही जण मी बघू शकते की ते जॉब एक्सपिरियन्स घेऊन आहेत, 1 or 2 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस. त्याच्यानंतर इसके बाद तीसरा प्रश्न ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, आप एक फ्रेशर्स हो, तो आपके सीवी में आप कैसे हाईलाइट कर सकते हो आपके स्किल्स, एक्टिविटीज. देर आर मल्टीपल, दिस वन इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन आप अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हो. और एक प्रश्न है कि कवर लेटर. मे बी सम ऑफ यू डोंट नो व्हाट कवर लेटर इज, बट ये अभी आप आगे जाके जानोगे कि व्हाट इज अ कवर लेटर, हाउ डू यू राइट इट, एक्सेट्रा. इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है. आप फ्रीली आंसर करो. कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता तो इस सेशन में आपको समझाया जाए. और लास्ट क्वेश्चन है, आर यू ऑलरेडी डूइंग अ ग्रीन जॉब. आपको पोल आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए. सम पीपल हैव नॉट बीन एबल टू सी द पोल. तो अगर आप फोन से ज्वाइन कर रहे होगे तो यू हैव टू स्क्रॉल बैक टू द screen where you can see the poll. 100% attendees have answered the first question. Okay, so we have many people जो महाराष्ट्र से है. Thank you for joining. Currently, many people are students. Some few are with a job experience of 1 or 2 years or more, 2+ years. Okay, what is the objective of a cover letter? कहीं लोगों ने ऐसे कहा है कि to demonstrate how you are fit for the role you are applying for, which is the right answer. Are you already doing a green job or an internship? Sanskriti madam, do you want to take
the last option which you added, which is interesting. नहीं, So दिस इज रियली नाइस। मतलब कई लोगों ने उत्तर दिया है कि वो ऑलरेडी ग्रीन जॉब कर रहे हैं। दैट इज रियली गुड टू नो एंड गुड टू सी। और जो पते की बात ये है कि हम कोई भी जॉब को ग्रीन जॉब कैसे बना सकते हैं, ये एक सोचने की मतलब वी शुड रियली थिंक अबाउट दैट कि हाउ कैन ऑल जॉब्स बिकम ग्रीन जॉब्स। Great. So thanks for this very interesting poll and poll responses. Priyanka, over to you. I think maybe you can just start. I'm really happy to see also कि कई लोग volunteer experience, extracurricular activities इसमें already you're part of it. So wonderful. Yes. great, Okay. thank So you, let's thank you. let's go ahead. So मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। You all can see my screen. Yes, we can see. ग्रेट। सो जैसे आपको पता है आज का सेशन रेज्यूमे बिल्डिंग फॉर ग्रीन जॉब्स है। आप जब ग्रीन जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो कैसे आपको आपका सीवी दिखना चाहिए, हाउ शुड इट बी, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, इस बारे में आज का सेशन है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि ग्रीन जॉब्स करो इन्वायरमेंट सेक्टर की फील्ड में, बट ये सब जो इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे कि रेज्यूमे लिखना, एप्लीकेशंस कैसे करना, ये बहुत कम डिस्कशंस में आता है। तो हमें ऐसे लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एक इम्पोर्टेंट स्किल है आपको आपके कॉलेजेस के टाइम में सीखना। और बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको वेबसाइट्स भी शेयर करूंगी। उससे पहले मैं पहला प्रश्न जो आपको चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि क्या आपको क्या लगता है कि ग्रीन करियर्स मतलब क्या है, व्हाट आर ग्रीन जॉब्स एक्झॅक्टली। जे आपण खूप सारे वेळ म्हणतो की एन्व्हायरमेंटल सेक्टर मध्ये काम करायचं आहे, ग्रीन सेक्टर मध्ये ज्वाइन करायचं है, इस फील्ड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ जॉब्स आने वाले हैं या फिर आ ऑलरेडी चुके हैं। तो फिर इस सेक्टर में कैसे हम एनरोल कैसे, और व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ग्रीन करियर्स डू यू थिंक आर कमिंग अप। Chat is open. Chat is open, but nobody. I hope people are able to add in the chat. सर्वांना चॅट मतलब बॉक्स दिसत आहे, ऍड करायला ऑप्शन आहे। हाँ नहीं, it wasn't open. Now it is open. सो मी परत प्रश्न विचारते की तुम्ही जेव्हा ग्रीन सेक्टर हा विषय ऐकता तर काय तुम्हाला दिसतं ह्याच्यामध्ये, क्या आपको लगता है कि ग्रीन सेक्टर क्या हो सकता है। यस, वी गेटिंग अ फ्यू थिंग्स। Okay, jobs related to environment and sustainability, preserving the environment, agriculture sector. Great, exactly. So agriculture sector एक ऐसा sector है जहाँ पे sustainable agriculture आता है, organic farming, अलग अलग technologies को use करके agriculture can be made more environmentally friendly. Agriculture is one sector. There are multiple सेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रीन जॉब्स का अभी शुरू हुआ है ट्रेंड ऑफ हैविंग जॉब्स व्हिच आर फोकस्ड फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पानी के सेक्टर में जाओ तो वाटर कंजर्वेशन, ऐसे टॉपिक्स नए नए इमर्ज हो रहे हैं। आप एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इस फील्ड में देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं। वेस्ट के सेक्टर में प्लास्टिक रिडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अलग अलग एरियाज है जहाँ पे ग्रीन करियर्स आप कर सकते हो। आपका पूरा करियर जो है आगे जाके इस फील्ड में आप डेडिकेट कर सकते हो। तो इट्स अ न्यू इमर्जिंग फील्ड जहाँ पे आप मोस्टली मैं ये सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर रिसर्चिंग। देखो कि आपको कौन से फील्ड में आइडियाज आते हैं, नए नए इंटरेस्ट आते हैं, और उस फील्ड में रिसर्च करो।
यहाँ ग्रीन सेक्टर में करियर करना मतलब क्या है, उसमें क्या एग्जैक्टली कर सकते हो। तो दो मैंने सिंप्लीफाई करके दो चीजें देखी है कि फर्स्टली एनालिसिस, मतलब अभी गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे पॉलिसीज आते हैं, राइट। सो फॉर इंस्टेंस जल जीवन मिशन इज वन मिशन जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के पॉलिसीज एड्रेस होते हैं, या फिर अलग अलग स्कीम्स होती है जैसे कि कुसुम योजना स्कीम। तो इन अलग अलग स्कीम्स के अंडर बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर वाटर कंजर्वेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। तो करियर्स में हम क्या करते हैं कि सोशल पर्सपेक्टिव देखते हैं। इज एवरीबडी गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इज एवरीबडी गेटिंग वाटर, पानी अगर मिल रहा है तो इनफ मिल रहा है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं। इट शुडंट बी कि हर घर में नल है लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो सोर्सेज है कि नहीं। ऐसे सारी चीजें इन पर्सपेक्टिव से ग्रीन करियर्स को देखा जाता है। दीज आर बेसिकली, ये सब ऐसी चीजें हैं जो यू हैव टू यूज योर अंडरस्टैंडिंग कि आप खुद आपके लाइफ में कैसे देखते हो कि क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है। इन सारी चीजों में से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को एनालाइज किया जाता है। अनदर मेजर थिंग इज कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, राइट। अपने कम्युनिटीज में वेस्ट एक बड़ा इशू है। एज अ कंट्री वी आर फेसिंग मेजर environmental impact, whether it is waste या फिर एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो सिस्टम्स को, या फिर मॉडल्स जो यूज किए जाते हैं, गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट मॉडल्स हो, उनको इम्प्रूव करके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर द मेन, ये मेन चीजें हैं जो ग्रीन करियर के अंडर आती है। अब देखा जाएगा तो जॉब्स एग्जैक्टली है कहाँ, राइट। तो रेज्यूमे तो आप लिखोगे, बट एग्जैक्टली कहाँ पे आप ये जॉब्स अप्लाई करोगे। सो आई जस्ट क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर एक फील्ड में, आप एग्रीकल्चर ले लो या फिर ट्रांसपोर्ट ले लो, हर फील्ड में अभी ग्रीन जॉब्स की शुरुआत हुई है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट अभी देखोगे तो देयर इज अ होल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सीन एज अ मेजर मेजर इंटरवेंशन। मुंबई में देखोगे तो बेस्ट बसेस का एग्जाम्पल है, जहाँ पे अलॉट ऑफ द बसेस अभी इलेक्ट्रिक बसेस आ गई है। या फिर शिवनेरी, शिवनेरी हैज ऑल्सो बिकम नाउ इलेक्ट्रिफाइड। तो दीज आर सम सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स बहुत सारे हैं एनर्जी में। जैसे मैंने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज अभी आ चुके हैं। तो फिर गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट इज ऑल ट्राइंग टू एनफोर्स दीज पॉलिसीज, बट जॉब्स जब आएंगे तब ऑल ऑफ अस यंग पीपल वी नीड टू बी रेडी। हमारे साथ हम अगर रेडी हो उन जॉब्स को लेने में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर ये आगे जाके इट विल बी यूजफुल फॉर अस। क्योंकि हम देखेंगे तो नॉर्मली ग्रीन जॉब्स करना इट्स स्टिल नॉट नॉर्मल, राइट। अभी तक ऐसे नहीं, अभी तक बहुत सारे जन मुझे पूछते कि कैसे ग्रीन जॉब्स में आए, हाउ डू आई स्टार्ट बीइंग पार्ट ऑफ ग्रीन जॉब्स, और हाउ डू आई गेट इनटू ग्रीन जॉब। सो देयर आर मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स, और आपका पर्सपेक्टिव इसमें डालना इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग जो जॉब रोल्स क्या है एग्जैक्टली इन दिस फील्ड, आप देखेंगे तो कैंपेनिंग, जॉब एडवोकेसी इज वन थिंग, वेर आप खुद एक कोई प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व करने के लिए कैंपेन कर सकते हो। फंड रेजिंग को लेके आप काम कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस दैट अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो और उसके लिए फंड्स रेज करने हैं, so there is one job role that is dedicated for fundraising. Then looking at practitioner over here, different projects are ongoing, तो projects के साथ आप जोड़ सकते हो project analysis, job roles can be project analyst, project manager, etc. तो ऐसे अलग अलग jobs है जिनको आप सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। डेटा कलेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट
मैकेनिज्म है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली जब आप कॉलेजेस में हो, राइट? रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन, रिसर्च डेटा कलेक्टर, ऐसे जॉब्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलता है। और प्रिलिमिनरी जो डेटा आपके पास मिलता है, या फिर वी कलेक्ट दैट डेटा, इसमें से आपको कई इंपॉर्टेंट चीजें समझने को आ सकती है। फिर पॉलिसीज में आप देख सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पॉलिसीज, देयर आर बहुत सारे पॉलिसी थिंक टैंक्स है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को एनालिसिस करके अलग अलग रिकमेंडेशन सजेशंस देते हैं। फिर क्लाइमेट फाइनेंस भी एक नया एरिया है जिसमें कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बहुत सारी नई चर्चा हो रही है। तो आप इन फील्ड्स में आप रिसर्च कर सकते हो। मैंने आप पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बताया। फिर आपके लोकल एरिया में लोकल बॉडीज जैसे ग्राम पंचायत हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, इनको भी कई बार इनके पास भी कई बार जॉब्स होते हैं। तो डेफिनेटली लुक आउट कि इन सारे एरियाज में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। दैट वाज ब्रीफली, ये एक आपको इंट्रोडक्शन था कि ग्रीन जॉब्स के बारे में क्या एग्जैक्टली ग्रीन करियर है। उसके बाद आई गो डायरेक्टली इनटू रेज्यूमे बिल्डिंग, व्हिच इज द मेन टॉपिक फॉर द सेशन। सो हियर आर सम ऑफ द टॉप टिप्स। अभी पोल से ये दिखा कि बहुत सारे जो ज्वाइन हुए हैं, यू आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जब कॉलेजेस में हो तो आपका सीवी, आपका रेज्यूमे एग्जैक्टली कैसे स्टैंड आउट होना चाहिए। स्टैंड आउट मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन आती है एक जॉब के लिए, अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 50 to 100 रेज्यूमेज आते हैं हायरिंग मैनेजर्स को। तो अगर आपको वो जॉब क्रैक करना है, राइट, तो कैसे आप करोगे? सो फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्रेशर हो तो आप कैसे, आप बेसिकली अलग अलग एक्टिविटीज में कर सकते हो। यू शुड टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑल्सो डू इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स में it can be a small internship managing a social media page, या फिर वॉलंटियर कर सकते हो आपके लोकल कम्युनिटी में, वॉलंटियरिंग फॉर बीच क्लीन अप ड्राइव्स। और इट कैन बी मोर देन जस्ट क्लीन अप ड्राइव्स, इट कैन ऑल्सो बी अबाउट how to build a small website for an organization, startup हो उनके साथ इंटर्न करना। इन सब चीजों से क्या होता है, आपके जो रेलेवेंट इंटरेस्ट है, आपके हॉबीज है, और आपके जो पैशन एरियाज है, उनमें रेज्यूमे में क्लियरली हाईलाइट होता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन। फिर जो प्रोजेक्ट्स आप करते हो आपके स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, वो आप स्पेसिफिकली हाईलाइट करो। बिकॉज वो प्रोजेक्ट्स, अगर समझो आप एक वेस्ट मैनेजमेंट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने ऑलरेडी एक डेटा कलेक्शन ऑन वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट किया है स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो ये चीज हायरिंग जो करते हैं उनको इजीली दिखती है कि ओके यू ऑलरेडी हैव दो स्किल्स टू डू अ प्रोजेक्ट। और कई बार आपके कॉलेजेस में मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि स्टेटिस्टिकल मॉड्यूल्स है, फिर सपोज इट्स अ बायोलॉजी मॉड्यूल। तो इन मॉड्यूल से दिखता है कि आपने ऑलरेडी कोर स्किल्स ऑलरेडी सीख लिए हैं और इनमें आपका स्ट्रेंथ है। तो दैट्स हाउ यू कैन डू। प्लस अगर आप ग्रीन क्लब्स में ऑलरेडी ज्वाइन हुए हो, ये भी दिखता, इसमें क्या आप एक्टिविटीज करते हो, इससे भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है। प्लस अभी नए जनरेशन में वी आर यूजिंग सोशल मीडिया, हम ब्लॉग्स लिखते हैं, वेदर इट इज मराठी, हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज। तो आप इन सब लिंक्स को ऑल्सो आप शेयर कर सकते हो। इनसे दिखता है कि आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, बोल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। सो दीज आर द मेन, ये सब हुआ कि कैसे आप एक फ्रेशर हो और आपका सीवी कैसा हाईलाइट हो सकता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेज्यूमेज। कहीं पहले जो दो रेज्यूमेज आप देख सकते हो इसमें दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। द थर्ड वन, जो तीसरा है, इसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के बारे में, इन इन दिस पर्सन हैज डन लेस लेवल ऑफ जॉब एक्सपीरियंस बट मोर वॉलंटियरिंग।
तो इन्होंने क्या किया है, उनके कोर्सेज को हाईलाइट किया है, वॉलेंटियर कहाँ किया है, कितने मंथ्स के लिए, ये सब हाईलाइट किया। कई बार आपने एनवाईकेएस के साथ वॉलेंटियर किया होगा, या फिर कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो वो आप डेफिनेटली रेज्यूमेज में ऐड करो। प्लस कई बार कॉलेजेस में आप सपोज प्रोफेसर्स के साथ पब्लिकेशंस लिखते हो, तो इनको भी हाईलाइट करो। फिर लैंग्वेजेस एटसेट्रा। सो दीज, ये एक समरी हुआ कि एग्जैक्टली रेज्यूमेज में क्या होना चाहिए, बट आई डीप डाइव इनटू द बेसिक टॉपिक्स फॉर योर रेज्यूमे। तो रेज्यूमे बेसिकली इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो जॉब एक्सपीरियंस या फिर आपका इंटरेस्ट हो, वो मैच कैसा होता है जो एप्लीकेशन आप जॉब के लिए करते हो उसके हिसाब से। सो कई बार ऐसे होता है कि वी जस्ट ऐसे ही रैंडमली अप्लाई करते रहते हैं, राइट? बिकॉज अभी ऐसा मार्केट है जहाँ पे ओवर बर्डन हुआ है। देर आर लेस जॉब्स एंड मोर एप्लीकेशंस। तो ऐसे जॉब्स को चूज करो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, आपका सीवी उसके लिए फिट हो। सेकंड इज, जो आप रेज्यूमे बनाओगे उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए कि अब तक आपने क्या क्या किया है टिल डेट, क्रोनोलॉजिकली you should include it in, so it should be an accurate representation of your career till now. Then जो आपने की अचीवमेंट्स अब तक किए हैं उनको हाईलाइट कीजिए, राइट? जो आपने रोज के टास्क में किया होगा उनको ऐड नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स है उनको ऐड करना है। प्लस अनदर मेजर टिप इज कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करिए। अभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स जब आप बनाते हो तो ऑटोमेटिकली यू कैन रन अ स्पेल चेक, सो प्लीज रिमेम्बर, बट मेनी डू फॉरगेट। और जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो उसको कन्वर्ट कीजिए पीडीएफ में। दैट इज द प्रिफर्ड फॉर्मेट, पीडीएफ इज द प्रिफर्ड फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशंस। और रेज्यूमे बस 2 पेजेस मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर और या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो तो 1 पेज इज ऑल्सो इनफ। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा सीवी है इसका मतलब मिल जाएगा जॉब। इफ यू हैव मैक्सिमम 2 पेजेस रेज्यूमे, दैट इज गुड इनफ। सो विल स्टार्ट कि एग्जैक्टली एक एक सेक्शंस में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, राइट? तो बिल्डिंग योर रेज्यूमे, फर्स्टली यू नीड योर नेम, then what is the profession अब तक आपने for example if it's a student you write a student, then or this person is a recycling coordinator। फिर इसके बाद एक समरी शॉर्ट पैराग्राफ आप लिख सकते हो कि एग्जैक्टली exactly आपकी इंटरेस्ट क्या है। आप अगर कोई रेलेवेंट डिग्री करते हो तो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फिर आपकी इंटरेस्ट क्या है एग्जैक्टली, सो देयर इंटरेस्ट इज बेसिकली टू एंश्योर प्रॉपर रिट्रीवल ऑफ रिसाइकलिंग, ये सारी चीजों में उनका इंटरेस्ट है। और फिर एक शॉर्ट में व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, राइट? यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एबिलिटी टू असेस टफ सिचुएशंस। तो इन इससे इजीली समझ में आता है कि एग्जैक्टली हाउ व्हाट इज द पर्सन इंटरेस्टेड इन। देन यू कैन ऐड योर फोन नंबर, योर ईमेल आईडी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एड्रेस में पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर दैट आपका डेटा है वो प्राइवेट होना चाहिए। पूरा एड्रेस लिखने से आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो शेयर मत करिए। जस्ट सिटी और कंट्री का नाम डाल सकते हो। और फिर अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसको भी ऐड करिए। आज के जमाने में लिंक्डइन बहुत ज्यादा यूज होता है। इट इज अ बिट ऑफ अ न्यू पेज। बहुत सारे जन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि लिंक्डइन आप पेज तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जन ऑलरेडी लिंक्डइन पे है। तो डोंट मिस आउट, वहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स आप नए नए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली ऑन देयर प्लेटफॉर्म। डायरेक्टली आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो डेफिनेटली रेकमेंड यू टू हैव योर ओन लिंक्डइन पेज। देन योर एजुकेशन यू शुड इंक्लूड इट लाइक दिस। तो एजुकेशन में आप कॉलेज का नाम और डिग्री कौन से करते हो, प्लस यू शुड ऐड हाउ मच, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ इट आपको अगर डिस्टिंक्शन मिला है तो वो ऐड कीजिए, ईयर ऐड कीजिए। इससे आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट होता है।
अगर आपके कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, डिसर्टेशन पार्ट ऑफ मास्टर्स अगर आपने किया है, तो उसके उसका नाम ऐड करिए। और जैसे मैंने पहले बोला कि मॉड्यूल्स कौन से हैं जो इंटरेस्टिंग आपने सीखे हैं, उसको ऐड करिए। प्लस स्टार्ट फ्रॉम मास्टर्स देन बैचलर्स फिर स्कूल, दैट इज द क्रोनोलॉजी। कि सबसे रीसेंट वाला मास्टर्स देन रेस्ट ऑफ इट। होपफुली दैट इज क्लियर। इफ इट्स नॉट क्लियर, अगर कुछ मैं फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए कि और इन्फॉर्मेशन इस बारे में चाहिए या फिर योर क्वेश्चन, बट मैं क्विकली प्रेजेंटेशन रन करूंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे इज योर जॉब एक्सपीरियंस। अगर किसी के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो ये सेक्शन बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो और हाईलाइट ऑन योर अदर पार्ट्स ऑफ योर इंटरेस्ट। अगर आपके पास जॉब हो तो फर्स्टली राइट व्हाट द डेजिग्नेशन इज, देन द ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपका कौन सा डेजिग्नेशन है, कंपनी का नाम, और what is the contract date from, not the entire date, just month और year डालना है, और अब कब तक आपने किया है वो डालना है। तो ये क्रोनोलॉजिकली आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो, और उसी से आप इंस्पायर होके आपका खुद का बना सकते हो रेज्यूमे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन इज देयर। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब में है उसको हाईलाइट करना है, और मेन क्या क्या अचीव किया है इन योर टाइम ऑफ योर जॉब, आपने क्या क्या अचीव किया है। फॉर इंस्टेंस कि आपने एक पेपर वर्क लीड किया है, या फिर आपने एक डिजाइन प्रोग्राम को डिजाइन किया, वो सब हाईलाइट करना है। दीज आर एग्जाम्पल्स। आप खुद भी आपका इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन डिफरेंट टारगेट्स, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आप इसमें डाल सकते हो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपने अकम्पलिशमेंट किया है या फिर जो आपको रियली आपको लगता है कि दैट वाज आउटस्टैंडिंग, यू राइट इट देयर। बट अगर नहीं भी किया हो तो भी उसको समराइज करके डाल सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। नेक्स्ट जो आती है बात स्किल्स डेमोन्स्ट्रेशन की। देर आर मल्टीपल वेज, आप देख सकते हो मैंने दोनों ऑप्शंस यहाँ पे डाले हैं कि आप ऐसे भी स्किल्स दिखा सकते हो कि अलग अलग स्किल्स, और व्हाट इज योर कॉम्पिटेंसी, आप कितना इजीली मैनेज करते हो वो स्किल, दैट मेथड इज ऑल्सो गिवन इन सम टेम्पलेट्स। या फिर आप क्लियरली लिख सकते हो कि दिस इज माई स्किल दैट आई एम गुड एट, क्वालिटेटिव रिसर्च एग्जाम्पल, या फिर रिसर्च राइटिंग इज योर स्किल दैट यू गुड एट। और फिर आपने एग्जैक्टली कैसे वो स्किल डिवेलप किया, या फिर कैसे वो एग्जैक्टली किया है। जैसे कि वेबिनार, इफ यू हैव डन अ वेबिनार, व्हाट काइंड ऑफ वेबिनार यू हैव डन, यू कैन राइट दैट। देन लैंग्वेजेस दैट यू नो, तो इंग्लिश, हिंदी, वट एवर लैंग्वेज, जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो ऐड करिएगा। इससे बहुत इजीली जो मैनेजर्स है, जो हायरिंग मैनेजर्स है, उनको दिखता है कि आप कौन से लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हो। IT skills are important, MS Office made, that is a major thing। आप उसके लिए अगर ऑनलाइन कोर्सेज है या फिर कोई कोर्स हो उसको ज्वाइन करिएगा, तो डेफिनेटली डू एन MS Office कोर्स, दैट इज अ बेसिक स्किल टू हैव इन दिस प्रेजेंट टाइम। देन कम्युनिकेशन, आप प्रेजेंटेशंस लिखो या फिर लेक्चर्स कंडक्ट करते हो तो ऐड दैट इन योर स्किल्स। देन इफ यू रन योर ओन सोशल मीडिया पेज, कई बार कहीं जन अपना खुद का एक सोशल मीडिया पेज, जैसे कि वेदर इट्स ऑन एनवायरनमेंट, वेदर इट्स ऑन वन स्पेसिफिक टॉपिक, उस पेज को हाईलाइट कर सकते हो कि एंड इस इससे आपका जो क्रिएटिव स्किल है वो दिखता है। लीडरशिप स्किल्स, बेसिकली आपने अगर टीम लीड की हो, टीम मैनेजमेंट, सुपरविजन, ऑल दिस विल कम अंडर लीडरशिप। ऑल्सो एड योर अचीवमेंट्स, अगर कोई स्कॉलरशिप्स हो, अवार्ड्स हो, ये सब आप ऐड कर सकते हो। फिर पब्लिकेशंस अगर हो वो ऐड कर सकते हो। इंटर्नशिप्स के अंडर आपने कुछ अवार्ड जीता है या फिर सर्टिफिकेट मिला है, वो ऐड कर सकते हो। ऑल्सो उस अवार्ड या सर्टिफिकेट का डेट भी ऐड करना, इससे इजीली पता चलता है कि एग्जैक्टली आपने कैसे कब किया है।
फिर कोर्सेज, अगर आपने कुछ ऑनलाइन कोर्स किया है, मैंने भी अभी एक ऑनलाइन कोर्स आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल या फिर ऑफलाइन 3 मंथ्स 2 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं। अगर वो स्पेसिफिक टॉपिक में हो तो वेल एंड गुड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, दैट विल हेल्प द hiring person to select your CV. Then write English, how much is your fluency in that particular language, you can add it this way. This is another example, आप कैसे लिख सकते हो कि courses, these are, this person has done 3 months of course, in what date, देर आर, मतलब अलग अलग वेज में आप आपका अचीवमेंट दिखा सकते हो। स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हो तो उसमें कैसे, कौन से स्पोर्ट्स के अंडर आपने जीता है, सम इवेंट दैट यू हैव डन, प्लीज ऐड दैट हियर। देन वॉलंटियरिंग, सब कई बार स्वच्छ भारत अभियान के वॉलंटियर सिस्टम होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहते हैं, माझी वसुंधरा में भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आपने वहां पे वॉलंटियर किया है, डेफिनेटली ऐड दैट। ओके, सो दैट इज ऑल टू डू विथ रेज्यूमेस। आपका रेज्यूमे अभी आपने ये ऐसे फॉलो किया तो एक रेज्यूमे बन जाता है एप्लीकेशन के लिए। बट अभी बहुत सारे रेज्यूमेस आते हैं, राइट? थिंक ऑफ यू एज अ हायरिंग मैनेजर। तो इसको सेपरेट रख के, हाउ डू यू मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट? आपको खुद एक स्टैंड आउट स्टूडेंट कैसे है वो दिखाना है। तो कई बार जॉब्स कवरिंग लेटर्स भी मांगते हैं, राइट? तो अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो समटाइम्स इंटर्नशिप्स के लिए भी कवरिंग लेटर लिखना पड़ता है। तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो? विल क्विकली, मैं क्विकली पहले आपको कवरिंग लेटर कैसे दिखता है वो दिखाती हूँ, कि होपफुली आप सबको दिख रहा है आपका नाम, करंट रोल, फिर जो आपने पहले रेज्यूमे में डाला है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आज की डेट, कंपनी जो आप, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ईमेल आईडी, और फिर डियर पर्सन, देन आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन, कौन सी पोजीशन है उसमें, और फिर क्यों आप अप्लाई कर रहे हो, क्यों आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो, ऑल दैट शुड बी इंक्लूडेड। सो गोइंग बैक टू इंटर्नशिप्स, राइट? अगर आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो कवर लेटर कैसे, क्या में क्या क्या लिखना पड़ता है? सो व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, और हाउ, कैसे अपनी एक्टिविटी से आपका इंटरेस्ट दिखाया है, आपका जो पैशन है वो दिख सकता है। थिंक ऑफ इट एज रेज्यूमे एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, बट इन द लेटर यू कैन रियली हाईलाइट, आप इजीली हाईलाइट कर सकते हो कि कैसे आपका एक्टिविटीज जुड़ता है आपके ये ऑर्गेनाइजेशन से। सो आपके लॉन्ग टाइम गोल्स क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स किए, एक्साइटमेंट क्या है, इस कंपनी से क्यों आप जुड़ना चाहते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन से क्यों आप जुड़ना चाहते हो, उसका ऐड करिए करिए। फिर पैशन, वॉलंटियरिंग एक्सेट्रा। Then I explained to you exactly what is in the cover letter. I'll jump to the next slide. सबसे इम्पोर्ट और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि कवर लेटर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो, बट व्हाट डू यू एग्जैक्टली, इसमें क्या लिखना है ये इम्पोर्टेंट है। कि इसमें बेसिकली जो कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करो कि एग्जैक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, क्या पोजीशन है जिसके लिए एप्लीकेशन आप करने वाले हो। हायरिंग मैनेजर के बारे में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर उनके लिंक्डइन पेज से आपको कुछ मिलता है तो उसमें से वो रिसर्च करके आप ये लेटर लिख सकते हो कि अ, आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेरे प्रोफाइल से आपका प्रोजेक्ट कैसा सिमिलर है, कैसा मेरा स्किल, हाउ इज माई स्किल वेरी यूजफुल फॉर योर organization. Write it as though that you are, how you are great fit on the team that you are applying for. So ये दोनों चीजें अगर आप करिए तो इट विल टेक अराउंड 4 hours टोटल टू डू दिस। रेज्यूमे तो आप बना ही दो, दैट विल टेक यू अराउंड 1 day, फुल फोकस करके, एंड देन यू कैन राइट योर कवर लेटर। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो मैं डेफिनेटली लूंगी। मुझे बस क्विकली बताना था कि कवर लेटर एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं। देन द मेन पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस इज अप्लाई अप्लाई अप्लाई, कि
बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो मेक श्योर आपने सारे एरियाज में देख के छांट के अच्छे से अप्लाई किया है। मल्टीपल रिसोर्सेज आर देयर, ये रिसोर्सेज मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगी। एंड या, थैंक यू सो मच। दिस इज बेसिकली व्हाट इज बेसिकली हाउ यू कैन राइट योर resume. Wonderful. Priyanka, thanks. That was really great and very practical tips. I think we have a lot of discussion also in the chat, some questions. So I'll put some of the, okay, can you just check what the QA and the chat to see some of the questions are very interesting for everybody. Let's discuss what we have for a few minutes. Yeah. Hello. Yes. Yes. There are few questions. Should I just read them collectively and then you can answer them? Yeah, go ahead. Yes, we Yeah. have maybe So 5 there is a minutes. question from Aryan Rathod. Where or how to connect in local government? He is asking. Then there is So that one another was in, question. sorry, the Aryan's question is also with regard to taking up some environmental conservation action. In case we are seeing some Yeah. issues, then who to Yeah. connect with, and local government or local community. Yeah. Hello. I'm not able to hear your voice properly. Yeah, Priyanka, can you hear? your voice is a little like Robotic. robotic, Bit. actually. So the first question is how to connect to local government and I think this was related to MICA thing that you explained, okay. basically. The other question was how to start these things in our college, because I need some support in this, and if colleges support me on this, I can reveal my ideas to this, make a bit of change. I think these are two questions are related to MICA thing. You want to take those? And I Yeah, you can take those. And also, there are two questions on basically on the resume and all that. We may take these questions first, related to our topic of today. Sure. Uh, yeah, so these are these questions from Ritesh. He's asking, is there a old job experience is important for a green job? And another question is, should I add, question by Bharati, should I add a conference attended on sustainable agriculture while applying for a waste management job? Okay. Interesting questions. Second one I'll answer is yes, you can add Uh, a conference that you have attended. Uh, अगर आपने कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अटेंड किया है और फिर आप वेस्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ऐड कर सकते हो डेफिनेटली। अगर बहुत सारे ऐसे हो ऑप्शंस कि आप वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हाईलाइट कर रहे हो, तो पहले उसको प्रेफरेंस दो एंड देन prefer the rest of the topics, but definitely you can always add uh, sustainable agriculture. The first question was uh, i- Sorry, is there a old job experience important for a green job? Old job means old green wala job or old job in general, he's asking. for a general job and is it applicable for green job? Then I would say definitely yes, right, Sanskriti? Because See, I think, yeah, even if, the old job is not a green job, Uh, it's still relevant. Yeah. Sorry, can you hear yeah, me yeah. now? Yeah. No. Your Okay. voice. Maybe you can remove your. Uh, once. can talk directly without earphones. Maybe. Yeah, I was saying that it's probably good to still include old jobs because you have a range of skills and they can always be used in a green context. Was that better audible? Yes, perfect. Okay, great. High pitch voice. Sorry about that. Okay, you continue. Yeah. Yes. Next question. Yes. So there is another question. Can a 12th pass student can apply for green job?
Student can, I think they'll need to do volunteering experience first. पहले वॉलंटियर कर सकते हो या फिर इंटर्नशिप्स कर सकते हो या फिर बैचलर्स डिग्री कर सकते हो, देन यू आर मोर रेडी फॉर अप्लाइंग फॉर ग्रीन जॉब्स। आई वुड से यू ज्यादा चांसेस है आपको एक ग्रीन जॉब लैंड करने के लिए, राइट? नहीं, बट आई वुड से कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। तो आई मीन इफ यू फिनिश स्कूलिंग junior college, that is also in some cases it's fine depending on the type of job it is. Yeah. And we should also keep the definition of job. It's not only that you are seeking an employment in a specific job. मतलब कई सारे जो the things that you can do. I mean, आप खुद भी कुछ अगर entrepreneurship start करना चाहते हो, तो those are also things that you can do. Yeah, and even it could be kind of a freelancing work also, rather than a job, maybe some assignment-based work or something like that also. Maybe if you are new to this field, then you can start with such kind of small assignment with some organization who is already working in green sector, organization or company, and then slowly, as you build your knowledge and skills related to the field, then and if you are interested, then you may go also for apply for a full-fledged job if you want. And entrepreneurship is really the another thing I think one must explore. अच्छा, I just want to very briefly share. आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ. Just a concept of green job. So can you see this visual? Yes, now na? Yes. हाँ, सो एक मतलब एक जो ग्रीन जॉब का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें एक तो कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो, जैसे कि यू आर एम्प्लॉयड इन से अ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड उसमें जो जॉब है कि हम वाटर को कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, एंड यू आर इन दैट डिविजन, नो? So that is certainly because it is looking at waste recycling or water recycling, and that's a green part of a larger manufacturing industry. The second is this right side wala jo greenish blue type hai, which is talking about ki jo company produce kar rahi hai, so that is itself a green product or it is itself a green service. Jaise ki aap say organic produce hai na, so that is already a green or it's material recovery, so that is like green because you're recycling. The job itself, the whole job is a green service or a green production unit. But the third element is of decent jobs, which is कि जो काम का जो एक social dimension होता है कि the workplace has to be a safe workplace, है ना? It has to be a fair income. It has to be equal opportunity. So these are dimensions of the quality of the job in terms of being a safe and socially secure sort of a job, where you also have the opportunity for self development. तो ये मतलब बात आप ध्यान रखो कि green is not only the content of what you do but also the type of job. So मतलब बहुत सारे ऐसे jobs हैं जो कि अभी decent job उस तरह से नहीं कहलाए जा सकते, but जो SDG 8 है, which is looking at decent work and economy, तो उसका ये एक भाग है. So when you will be managers, you will be entrepreneurs, you will you may be in charge of so many people at some stage. So your work is also to make sure that the work environment is a decent job, and you should always strive for it. Okay. Yeah, Sumit is asking, information should be also given about UNDP jobs and how to prepare a resume for it. Sumit says. So UNDP जॉब एज सच आप देख सकते हो कि उनके पोर्टल्स में होते हैं. आई वुड सजेस्ट यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर, जहाँ पे जॉब्स है बट दे आर एज अ वॉलंटियर. यू
पेमेंट भी मिलता है, और आपको उस ऑफिस में भी बैठ सकते हो, उन प्रोजेक्ट्स में फुली इन्वॉल्व हो सकते हो, आपका डेजिग्नेशन भी एट अ ऑफिसर लेवल होता है। तो दैट इज वन ग्रेट वे टू एंटर इनटू द यूएन सिस्टम। रेज्यूमे उसके लिए कुछ अलग नहीं करना है, बट जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको हाईलाइट करिए। अगर आप एक नेटवर्क से जुड़े हो, जैसे कि यूएनडीपी के भी अलग अलग नेटवर्क्स है, उनके चैलेंजेस, टाइट टर्नर चैलेंज इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। इन सारे जो उनके वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में अगर आप ज्वाइन होते हो तो उनका नेटवर्क, आपको उन नेटवर्क से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनसे आपके चांसेस ज्यादा है, राइट? Yes, sure. Okay, we are almost at time. Thank you all for all the questions. These are very interesting and important questions, very relevant questions. And what I would now request, अवधूत, आप जो आगे आने वाला वेबिनार है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो. About our next webinar. I couldn't hear. Yeah. We have this another upcoming webinar. आपल्या या मंडेला is Monday on 4th September. There is a webinar, which is our special webinar apart from this our webinar series. And this webinar is about upcycling of natural resources. And basically, since Ganesh Chaturthi and Ganesh festival are coming up, so the webinar is about how we can the natural resource which basically uses शाडू माती आपण जे म्हणतो किंवा क्ले आपण जे म्हणतो. सो त्या क्लेच्या मूर्ती आफ्टर द इमर्शन ऑफ द आयडॉल, how you can recycle or upcycle them, that clay basically, because it's a natural resource, it's a finite resource. And basically there is a Punaravartan is a campaign which is there in Pune and also in another 8 cities in India. So they are trying to form a close this loop where basically after the Ganesh Utsav, how this idol or this clays could be again supplied to the artisans so that they can make these idols again for the next year, and in the so that the finite resource is shadow clay that could be preserved. So uh, this year also they are doing this campaign in several cities in Maharashtra. So we'll hear from them what this campaign is all about and how youth can participate or volunteer in this campaign at various stages. It could be a survey, it could be actual clay collection, it could be other volunteering effort, it could be becoming a collection point itself, your college or institute. Several opportunities are there through which you can join this campaign. So we'll hear about it more on Monday, 5 p.m. Yusuf is there in case I will you also need share. to unmute him. And just Yusuf, if you can say a word or two, it would be great. I will need to add him as a panelist. Just give me a minute. You must have got an email. Just click on the link with the email and you'll be able to join. Okay. I'm not sure he's actually able to. If it's a bit complex, then it's okay, I guess. It's okay, I guess. So, yeah. Okay, so thank you all very much, and thanks for joining in. Thanks for your wonderful questions and suggestions and invitations to connect with you. We will certainly do that. We hope that all of you would join the Micah. Oh, Yusuf is here. How nice. Hello, Yusuf.
Okay, you can unmute. Yes. Yes, am I audible? Yes, yes. Yeah. Yes, sorry. I think, wow, 158 young people. Okay, Mm. great. So, great. Actually, I'm traveling, so I would like to prefer to speak an audio. I think, is English good or we Yes, speak? yes. Okay, fine. So, students, young people, new generation, Generation Z, whatever we can say. First of all, thank you very much for joining in such a late evening. That too, missing India-Pakistan match. So that's a great kind of you can say enthusiasm. So one of the things that I must say that I was going through some of the chats and everything. So of course, everyone is looking for some job, green jobs and everything. But I I would like to also mention that once you have certain kind of skill set and very kind of a unique skill set, I think automatically it addresses the issues of the job. So I would rather focusing more on the skilling part. The skill is very critical in these days, and when you see the skill, you don't have to get into a skill like getting something like Chandrayaan 3 or artificial intelligence. It is very much a localized skills. So whatever you're doing in your respective sector, respective colleges, respective schools, or respective jobs, you can always try to integrate certain kind of a green skilling. And when you say the green skilling, it doesn't only necessarily restricted to their plantation or certain part, but I believe whatever is happening in India in a transition of a country like India, like there will be a lot of kind of a job largely on the service sector on not only for the creation of the assets but also the operational and maintenance, whether it's linked with the solar panel, energy transitions, e-vehicles, everything. So, and there is, so it's not only startup but also to the service sector. So I won't take much time, but I will still say that you don't have to do something new for this entire dream job or dream skilling aim. You may need to do the same thing differently. It's not doing different thing differently, but you can do the same thing differently with a macro perspective, understanding about whatever happening in and around your city, in and around your village, small town, society, anything. So wish you all the best, and I believe that the recording will be shared with all the participants. And I think Priyanka and Sanskriti and Avdut has also spoke about Mica or maybe a little bit of We Naturalist and the course. So please be associated with us. Remember, we are in a journey, and a journey is together. It doesn't mean always that we have to reach a destination, but the journey and the togetherness is very critical. So again, I wish you all the best, and thank you, Sanskriti, Priyanka, and Avdut for organizing such a nice kind of a evening, and that too missing the very critical cricket match. Thank you. Over to you, Sanskriti. Thank you, Yusuf. And Priyanka's suggestion was that I think there's some interest. We could just continue for 10-15 more minutes. थोड़े जो प्रश्न आए हैं उसको थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेंगे. मतलब इट इज नॉट कंपलसरी कि अगर आप जा रहे हो मैच के लिए तो ठीक है, बट कोई लोग थोड़ा 10-15 मिनट हम और चर्चा करना चाहें तो या वेलकम टू स्टे ऑन. आणि मी क्विकली युसुफ सरांचं इंट्रोडक्शन ज्यांना माहिती नाही त्यांना करून देते. युसुफ सर वॉश, क्लायमेट आणि डिझास्टर स्पेशलिस्ट आहेत युनिसेफ महाराष्ट्रामध्ये. ते ह्या प्रोग्राम्स मध्ये खूप खूप व्यवस्थित लक्ष घालतात. त्यांनी हा प्रोग्राम आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवलेला आहे आणि आम्ही सगळे ह्यावरती काम करतो. तर खूप खूप धन्यवाद युसुफ सरांचं की तुम्ही जॉईन केलं, प्लस ह्यामध्ये खूप इंटरेस्ट घेता ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये. मी ट्रान्सलेट करते युसुफ सरांनी जे सांगितलं की जे जॉब्स आपण काय करतो हे ह्यापेक्षा आपले जे ग्रीन स्किल्स आहेत हे वाढवणे महत्वाचं आहे. म्हणजे जे आपले वेगवेगळे आपण स्किल्स म्हणतो की कम्युनिकेशन कसं करावं किंवा तुमचे ऍक्शन तुम्ही टीम वर्क मधनं कसं करता, हे सगळे सॉफ्ट स्किल्स आहेत. ह्यामध्ये जास्ती लक्ष देणं महत्वाचं आहे. ते जर तुम्हाला आलं तर इझिली तुम्हाला जॉब्स मिळतील. तर खूपच धन्यवाद युसुफ सर तुम्ही जॉईन केल्याबद्दल. आणि खूप सारे क्वेश्चन्स आहेत. अशोक घोरपडे म्हणतात की नाईस इन्फॉर्मेशन,
थँक यू. सो मेनी कॉमेंट्स कमिंग थ्रू. मला काही क्वेश्चन्स घ्यायचे आहेत. अवधूत, तुम्ही करू शकता शेअर काही क्वेश्चन्स? येस. सो स्टार्टिंगला ऍक्च्युली मी आपल्या टॉपिकच्या रिलेटेडचे क्वेश्चन पहिल्यांदा घेतले होते. सो बाकी पण काही क्वेश्चन आहेत की ते इन जनरल मायका आणि लोकल लेवलच्या युथ क्लायमेट ऍक्शन संदर्भातले आहेत. सो द क्वेश्चन इज की बाय आर्यन, व्हेअर और हाऊ टू कनेक्ट इन अ लोकल गव्हर्नमेंट. Yeah, and another question is how we can start these things in our college, and so we can make a little bit change. Yeah. Those two questions, I think we can take Thank you, them. ma'am. You There want are to ask? And further how can questions I also. create a group of people for working for nature and environment in my local area? Do you want to take it? Sanskriti ma'am, you want to take it? No, we are hearing from you. Abdul, you Okay. could try. Yeah, otherwise, yeah. Yes. Uh, yeah. So basically, in your, I will take the first question, and then I will, if I want to work on nature and environment. So, yeah. So, बेसिकली व्हॉट आय वुड से की असं कधीच नसतं की आपण पहिल्यांदा वी हॅव अ आयडिया वी हॅव इंटेन्शन टू वर्क ऑन सम इश्यू इन अवर लोकल एरिया अँड नो बडी इज देअर. असं कधीच नसतं. सो देर आर ऑलवेज लाईक माइंडेड पीपल हु आर देअर ऑलरेडी वर्किंग, किंवा तुमच्यासारखे हु वॉन्ट्स टू डू समथिंग बट स्टील डोंट नो हाऊ टू स्टार्ट अँड ऑल. सो बेसिकली पहिल्यांदा आपल्या एरियामध्ये असे हु आर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन सच इश्यूज. Maybe, for example, if you want to work on solid waste, but there might be people who work on some kind of a soil conservation or water conservation or some related field, but they are all maybe added by sustainable development goals, किंवा एकाच डिरेक्शनला एक जर्नी करणारे लोक असतात. मे बी प्रत्येकाचे रूट थोडे थोडे वेगळे असतात. सो अशा सगळ्या लोकांचं एकतर त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करणं, त्यांच्याशी थोडं नेटवर्क बनवणं, हे थोडंसं करणं, मी म्हणेन की ते कॅन स्टार्ट विथ दॅट. At least find some like-minded people in your community, in your surrounding. आणि मग त्यानंतर then you can take up, you can participate in their events. So make you can say असं थोडंसं एक चांगलं नेटवर्क बनलं, then you and you want to work on the specific issue, then slowly you can also plan some activity की तुम्हाला जो liking area आहे. For example, there are you want to start on a local biodiversity conservation, for example. Then you can start discussing about these issues in your recent network. आणि मग तिथे some discussion, deliberation, some experts will pitch in. आणि मग तुम्ही काहीतरी एखादं कॅम्पेन, एखादं काही ऍक्शन प्लॅन करताय, and then you can go for it. So it will not happen immediately, maybe. It's a long process. You have to be patient a bit and find the like-minded people basically in your area and experts also. So that could be a good start. If I would say. Priyanka, Sanskrit, if you want to add anything, please. आणि अजून एक मला असं सजेस्ट करायचं की तुम्ही जेव्हा ग्रुप तयार करता की तुम्ही वीकली किंवा मंथली मीटिंग्स घेऊ शकता. त्यांच्यासोबत इंटरॅक्शन जेव्हा तुम्ही कंटिन्यू ठेवलं तर मग तो ग्रुप मधनं तुम्हाला प्रोडक्टिव्ह काहीतरी करू शकता. वेळ लागतो आणि म्हणजे लगेच नाही आपल्याला दिसत काही इम्पॅक्ट. आणि एन्व्हायरमेंटच्या विषयात जर तुम्ही काम कराल तर त्यामध्ये तर खूपच वेळ लागतो. म्हणजे इयर्स इट टेक्स टू ऍक्च्युली सी की ह्यामधनं इम्पॅक्ट दिसतोय आपल्याला, किंवा कमी काहीतरी म्हणजे पोल्युशन असेल तर ते कमी झालंय, असं वेळ लागतो. तर दोन्ही गोष्टी आहेत, कंटिन्युअस एंगेजमेंट आणि प्लस कीपिंग दॅट पेशन्स फॉर रिझल्ट. येस. आणि जर तुम्ही आता स्टुडंट असाल कॉलेजमध्ये किंवा असं, तर मे बी कॉलेजमध्ये बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये नेचर क्लब किंवा इको क्लब अशा काही ना काही स्टुडंट व्हॉलेंटियर ग्रुप्स असतात. तिथे व्हॉलेंटरी क्लीनअप ड्राईव्ह करणं असेल, किंवा ट्री प्लांटेशन करणं असेल, किंवा वॉटर बॉडीजचे सर्वे करणं असेल, असं काही ना काही ऍक्टिव्हिटी ते करत असतात. सो तसा जर ग्रुप तुमच्या कॉलेजमध्ये ऑलरेडी असेल तर यू कॅन एनिवे जॉईन देम. आणि जर नसेल तर यू कॅन स्टार्ट वर, की बेसिकली एक छोट्या छोट्या स्मॉल ऍक्टिव्हिटी पासून तुम्ही आपल्या कॉलेजमध्ये चालू करू शकता. की बेसिकली ऍक्टिव्हिटी करायला कुठल्या थीम्स, तर आपण म्हणतो की तुम्ही वॉटर कन्झर्वेशन बद्दल करू शकता, आपल्या कॅम्पसच्या पाण्याबद्दलचा, आपल्या परिसराबद्दलच्या वॉटर बॉडीज काय आहेत, त्यांचं स्टेटस काय आहे, त्याचा काही स्टडी करून तुम्ही यू कॅन जस्ट स्टार्ट. काही छोटं कॅम्पेन किंवा अवेअरनेस ड्राईव्ह करून तुम्ही सुरुवात करू शकता. सो असं मोबिलाइज करून कॉलेजमध्ये एखादा जरी ग्रुप बनला
तरी तो ग्रुप पुढे खूप चांगल्या पद्धतीनं वेगळ्या थीमॅटिक एरिया, नॉट ओनली लिमिटेड टू मे बी जस्ट ट्री प्लांटेशन ऑर वेस्ट ड्राईव्ह, एनर्जी कॉन्झर्वेशन असेल, वॉटर कॉन्झर्वेशन असेल आणि बेसिकली क्लायमेट चेंज बद्दलचा अवेअरनेस स्प्रेड करणं असेल, तर याबद्दलही तो ग्रुप हळूहळू पुढे आपापल्या इंटरेस्ट एरियाप्रमाणे काम करू शकेल. मग तुमच्या कॉलेजमध्ये किंवा आउटसाइड कॉलेज सुद्धा जे कोणी लोकल एक्सपर्ट्स असतील या विषयामध्ये, त्यांना तुम्ही बोलवून त्यांचे काही वेबिनार्स किंवा गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गनाईज करू शकता. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं तुम्ही हळूहळू त्यामध्ये स्टुडंट्सना, तुमच्या कलिग्सना, फ्रेंड्सना हळूहळू इन्व्हॉल्व्ह करून देऊन त्या ग्रुपची ऍक्टिव्हिटी चांगली प्रकारे बिल्ड करू शकतो. Thank you. So, hope to see everybody again on the 4th and then on the coming Saturdays. Okay, so Yes, have a I very have. nice evening. Yes, Avdut, go ahead. Yeah, I have shared the link for 4th in the chat box. Sorry. Okay. I will share it again. Yeah, sorry. ऑल्सो ह्या सेशनचं रेकॉर्डिंग तुम्हाला दिलं जाईल. मायकाच्या ग्रुपमध्ये ऍड करू, प्लस तुमच्या ईमेल आयडीज वरती आपण शेअर करू शकतो. आणि दर सॅटर्डे, दर शनिवारी 5 वाजता हा सिरीज रन करणार आहोत. तर नेक्स्ट टाइम परत तुम्ही जॉईन व्हा. विल गेट टू हिअर मोर फ्रॉम अदर्स. Okay, have a great Sunday and see you next week. Bye-bye.